Good evening and welcome all of you. Welcome to the Asra Foundation. I'm Anand and I welcome all of you in this discussion today. सब दर्शकों का स्वागत। दयासरा फाउंडेशन के जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स चालू रहते हैं उसमें आज हम गूगल माई बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। And today with us we have Tejas. Tejas is from Upgrowth and he has a wide experience in social media and various methods of basically use of digital technology for marketing. So Tejas, welcome to the Asra Foundation. Thank you, Anand. Thanks a lot. Tejas, I have a question for you. So you started your career pretty early and at a very young age. So why did you think that digital marketing is going to be your career? So I belong to that generation which kind of grew with digital platforms. Today people in schools, they already know what is Facebook, what is Instagram. But when I was in school, it was pretty new. So it used to be very nice thing in my school if you have a Facebook account and you can actually post on Facebook. It used to be something like very cool. Okay, he posts things on Facebook, or did you check out his new photo on Facebook? Today that is pretty common. Back then it was very new. So as these digital platforms grew and their importance grew, I realized that this is a field which has the market in the future. It is not going to it is going to replace many other platforms like typical media, paper media, print media. Today there are so many businesses which do not have any office. They do not advertise anything in print media, but still they do. They generate a lot of business. They generate a lot of employment, and they generate a lot of revenue. And it is because they have a presence on social media. They are on Facebook, they are on Instagram, and they are using it very wisely. So digital marketing has changed everything. Absolutely. और तेजस हमारी अपग्रोथ करके जो पार्टनर टीम है उस टीम में से है भास्कर who leads that team upgrowth. हम भास्कर से कई बार बात कर चुके हैं. We have discussed things with Sahil also, and today we have Tejas from that team. Tejas, so what exactly did you study before you actually jumped into this? I'm sure your studies are continuing, but आपने ऐसा क्या सीखा? So basically, I'm a commerce graduate, and then so I started as a commerce graduate. So basically, I started as a science student, but then I realized. So I graduated in commerce, and currently I'm pursuing a master's degree in economics from here. I'm working as well, so I'm pursuing that side. Great. And Tejas is a great expert at digital marketing. So Tejas, welcome once again. I will start with one question. जब हम Facebook के बारे में अभी बात कर रहे थे कि Facebook पर पोस्ट करना कुछ साल पहले नॉवेल्टी था, आज वो कॉमन है और उसका यूज बिजनेस के लिए करना ये भी अभी रेगुलर प्रैक्टिस हो चुकी है. ऐसा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, तो इसमें से गूगल माई बिजनेस के बारे में जो आज हम जानने वाले हैं, तो गूगल माई बिजनेस की ऐसी कौन सी विशेषता है टू शेयर विद ऑल आवर एंटरप्रेन्योर्स? अब बाकी platforms and I'm sure we are going to dive deep into the details of it. Yes. So Google is something which people who do not have any social media platform, they also use it because it is such a common thing. It is so much part of it. It's like any other limb of our body. जिनका कोई फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है वो गूगल का इस्तेमाल करते हैं. अच्छी बात गूगल की यह है कि गूगल माई बिजनेस कंप्लीटली फ्री वेबसाइट. हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप फ्री में अकाउंट तैयार कर वहां पे आपको पेड एड्स देने होंगे, पर गूगल पे कुछ नहीं है. उनके लिए गूगल इज द बूम. एवरीथिंग on this platform is available for free and everything is available at a glance. So that's why Google is different. Great. तो डिटेल में जान
चाहेंगे वी आर ऑल्सो लाइव पेज, सो वहां भी अगर आपको कुछ सवाल है तो आपके सवालों के जवाब भी देंगे. Yes. Start with the presentation. Yes. Small presentation. Okay. So before we start, read this funny cartoon. If you're able to understand this, great. By the end of this, by the end we are finished with this presentation, you will understand it. So I'll just give you a minute to read it. I hope you got the meaning. So, is something if you know anything, still Google it and praise to Google. अभी भगवान है तो भगवान भगवान की पूजा करो. Google is like a god. So before I start my presentation, let me ask you about Google. किसके लिए इस्तेमाल करते हो? For what purpose you need Google? And just write your answers in the chat box up there. I'm sure everyone. So what it is, that's me in the chat box. In basic, very correct. Get information. That's that information. You search for information. There is no right or wrong answer. Whatever you say, it is absolutely correct. We use Google for different purposes, but today we are going to know how to use Google for your business. How to use Google My Business for your business. Yeah. So basically, let's try to understand exactly is Google My Business. So it is absolutely free and easy to use tool. जैसा मैंने पहले ही कहा था कि why Google the platform is, it is absolutely free. You can create your profile for free. ये बहुत ही easy tool है. इसका app भी है. There is only one disadvantage of having an app. What is that disadvantage? I will tell you that later. Google Business is especially made for small business owners. Now, why exactly it is made for small business owners is simple. It is free. So आपको अगर कोई वेबसाइट आपकी क्रिएट करनी है टुडे, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए ये पॉसिबल होगा ऐसा नहीं. तो इसीलिए आप गूगल माई बिजनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. गूगल माई बिजनेस से आप एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं. हाँ, that website is not that dynamic. It is a very simple website, but still for a small business owner who is just starting his business or who is just entering into digital marketing, this website is really important and everyone should have it. Then Google My Business, because of Google My Business, you can manage your presence across Google, including search and maps. So once you create your Google My Business profile, अपने आप से Google Map पर भी आप आ जाते हैं. कैसे मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जब हम एड्रेस डालते हैं तब मैप पे हमें अपना लोकेशन सेट करना पड़ता है. कैसे करते हैं, I will show that to you. Then it is the most effective use for online search, for around me searches. Now what exactly is around me searches? Now ऐसा consider कीजिए कि मुझे केक खरीदना है. There is a birthday, some of my friend's birthday, and I want to buy a cake for him. Okay, and my friend specifically likes let's say pineapple cake. और मुझे पता नहीं है कि मेरे यहाँ पे where can I get pineapple cake. So today what people do, they just go on Google and they search cake around me or cake shop around me. So if you have a business, or let's say you have a bakery or a cake manufacturing business or a cake production business, and if someone does this kind of search
in your locality, then your business will show up. And you can do this for anything. You can search for doctors, you can search for electrician, you can search for plumber, for anything you can search. And if your business is listed on Google My Business, then आपका नाम भी वहां पे आ जाएगा, आपका बिजनेस भी लोगों को दिखेगा, करेक्ट। और आपका वेरीफाइड बिजनेस होना चाहिए। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं गूगल पे हम अभी देखेंगे। वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। इस वेरिफिकेशन के बाद ही गूगल के बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है, जैसे कि इनसाइट्स होता है या प्रोडक्ट कैटलॉग होता है, वो ओपन होता है। तो वेरिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे। तो एक ये लिंक है, मैं ये चैट बॉक्स में अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका ऑलरेडी गूगल माय बिजनेस पे आपका प्रेजेंस है तो ठीक है, आपका नहीं, आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो साइड बाय साइड आप मेरे साथ ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप नोट्स बना के रखिए, बाद में आप ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सीधे जाएंगे हाउ टू क्रिएट योर गूगल माय बिजनेस अकाउंट पे। तो अभी मैं एक डमी अकाउंट बनाने वाला हूँ, डमी बिजनेस का अकाउंट बनाने वाला हूँ। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू दिस। सो इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक, देन ये सामने वाला जो पेज है, ये पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एड योर बिजनेस टू गूगल पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको बिजनेस का नाम डालना है। तो मैं डालता हूँ तेजस केक शॉप, ठीक है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, जस्ट कोई भी रैंडम नाम मैंने लिखा है। फिर यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी हमें डालनी होती है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी पे बिलोंग करता है। तो अब ये केक शॉप है, तो मैं बेकरी एंड केक शॉप ऐसे डालता हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट। ना गूगल आपको पूछता है कि डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। तो अगर आपको कोई शॉप है, आपका ऑफिस है, आपको कोई स्टोर है जहां पे आप कस्टमर्स को बुलाते हैं, वेयर कस्टमर्स कैन कम टू यू एंड अप्रोच यू एंड बाय योर प्रोडक्ट, बाय योर सर्विस, देन यू हैव टू क्लिक यस। अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस ही है, देन यू कैन क्लिक ऑन नो। तो अभी मेरा केक का शॉप है, तो मेरा दुकान होगा ही, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट। तो अभी मुझे एड्रेस डालना है, एक ऐसा ही मैं कुछ एड्रेस डाल देता हूँ कि प्लॉट नंबर, शॉप नंबर डालता हूँ, शॉप नंबर 10 बिजनेस प्लाजा करवे नगर, ओके। सिटी यहाँ पे पुणे, पिन कोड डालूंगा मैं। मेरा पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे स्टेट हमें डालना है महाराष्ट्र, और अभी पे क्लिक करना है। अब गूगल आपको ऑप्शंस देगा, क्योंकि गूगल कोई डुप्लीकेट नहीं चाहता है। तो गूगल आपको पूछेगा कि ये बिजनेस है क्या आप गलती से फिर से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं क्या। तो गूगल विल आस्क यू दिस, यू हैव टू क्लिक ऑन नन ऑफ दिस बिकॉज नन ऑफ दिस आर योर बिजनेस। यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Google will pop up this map. Okay, you can zoom in and zoom out. You have put your address, you have already put there. Accordingly, Google will take you to that location. तो अभी मैंने करवे नगर डाला है, तो Google has taken me to करवे नगर. If you write Shivaji Nagar, then Google will take you to Shivaji Nagar, and there you know where exactly your address is located. आपको पता है कि आपका business exactly कहाँ पे located है। तो वहां पे जाके आपको ये पिन पॉइंट करना है। देखिए ये जो बलून है, हम मैप पे हमेशा देखते हैं ये बलून। जब हम कोई डायरेक्शंस ढूंढते हैं तो हमें ये बलून दिखता है। तो ये बलून मूव हो सकता है, ये जूम आउट हो सकता है, जूम इन हो सकता है। और यहाँ पे आप देखिए ममता स्वीट से, शायद मेरा बिजनेस अगर इस ममता स्वीट के बाजू में है तो मैं वहां पे ऐसे रख दूंगा और नेक्स्ट को क्लिक करूंगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये सेट हो जाएगा जब कोई भी आपके बिजनेस की डायरेक्शंस ढूंढेगा, देन दिस एड्रेस विल शो अप। सो इफ यू टेक टाइम देन डू इट, बट डू इट वेरी केयरफुली। इट डजंट मैटर हाउ मच टाइम यू टेक, डू इट केयरफुली, ओके। यहाँ से कोई किसी को कुछ सवाल है अभी यहाँ तक?
Anyone have has any question? You can ask your question if you have anything. Or should I move on? Tejas, this is Divakar. Yeah, hi. Tejas, actually, this location, I have my business page, and Okay. wrongly I have pinned it somewhere nearby, 600 meters. Okay. Okay. I want to modify it, but I'm not able to modify. So, is there any way can I modify it? Can you tell me why you're not able to modify it? Does any reasons as to why you're not able to do that? I think when I had tried initially, it was showing me duplicate location or something. Okay. That is one thing. And then after that, it is not at all picking it. Saying, Do you have any other page? You said duplicate page. So do you have a page you have created? no. Okay. So I think for this, what you can do is duplication arises when two businesses are registered at same address. So just I will suggest you to check if there is another page or another profile of your business by mistake you created it earlier or someone else created for you, and check if they have put that address there. Okay. Or the second thing is, if you don't find any such issue, then what I will suggest is change your address once and then pinpoint it correctly. So this way also you can do this. So earlier what you were you were trying to change the location on map. No. We have to change the address only. Then only it will take it to map. Without changing address, it is not taking. So address भी change नहीं हो रहा क्या? You are not able to change the address as well. मैं जैसे ही change करता हूँ, it is maybe I can do one thing. Continue with the call. मैं अभी try करता हूँ. While try that. Then maybe I can share my screen and see. Yes. Okay. We can connect later. No problem. We can connect later as well. Sure. Yes. Okay. Yes. Anyone else? Do anyone else has any question? Please carry on, sir. Thank you. Yeah. Okay. So I will carry on. Okay. So now after you pinpoint your address on the map, the Google will ask you, do you provide deliveries or home and office visits? आप लोगों के घर पे जाते हैं, उनको होम डिलीवरी करते हैं क्या? अगर आप करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते तो नो। अभी मेरा तो शॉप है इसलिए मैं नो पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट। तो गूगल टू ऐड योर फोन नंबर, आप फोन नंबर डाल सकते हैं। और आपकी अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे जाइए, आपकी वेबसाइट नहीं है तो आई डोंट हैव वेबसाइट ऐसा करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर लैंडिंग पेज हो तो लैंडिंग पेज आप आगे जाके आपकी वेबसाइट है, मतलब अमेज़न वगैरह ऐसा लैंडिंग पेज आप पूछ रहे हैं ना, करेक्ट? हाँ जी। यू कैन ऐड दैट लेटर। यहाँ पे अगर आपकी बिजनेस की कोई वेबसाइट है तो वो आप वहां पे डाल सकते हैं। थैंक यू। ओके, या नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, चूज अ वे टू वेरीफाई। Now earlier what Google used to do was they would send you a postcard with a verification code. Okay, the reason is pretty simple. Google does not want any fake business. Now imagine if we verify this business right now, there is no such business as Tejas Cake Shop, correct? But if Google does not verify, then a fake business will be registered, and Google does not want that. So what Google will do, they will send you a postcard. Okay, that postcard will be sent to your address, and then there will be a code in that postcard. वो जो कोड होता है वो कोड आप डालेंगे तो आपका बिजनेस वेरीफाई होगा। तो दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है? पर अभी गूगल ने इसमें एक थोड़ा सा चेंज किया है। अब कुछ ऐसे बिजनेस है जो सिर्फ पर ये गूगल के पॉलिसी पे डिपेंड होता है। इट इज नॉट अप टू अस टू चूज द वे वी वांट टू वेरीफाई आवर बिजनेस। इट इज एब्सोल्युटली गूगल्स पॉलिसी हाउ दे वांट टू डू दैट। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें गूगल सिर्फ फोन नंबर डाल के आपको ओटीपी आता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पोस्टकार्ड के लिए वेट करना होता है। तो 12 से 15 दिन में आपको ये पोस्टकार्ड आता है। इंडियन मेल से आपको ये पोस्टकार्ड आता है, उसमें एक वेरिफिकेशन कोड होता है
तो कैसे डालते हैं वो ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. So abhi I will stop here because if I proceed any further, then this business will be registered. But there is no such business, so I will stop here and we'll go back to the presentation. Any queries? Any question? No, sir. Thank you. Okay, fine. Hello. Huh. Hello, ma'am. Hello. Yes. Yeah. Sorry, I joined a little late. So can I know where I have to exactly? First 5 minutes. Can you just? Do you want me to repeat everything or what? Just Actually, 5 minutes. Earlier 5 minutes because yeah. I didn't know from where I have. Where will I get this page? Google Business Profile Manager. Where will I get this page from? Okay, is the link visible to you in the chat box? Because I had put a link in the chat box. Is it visible to you? You have to just go to that link and then you can proceed further. Okay, If not, so in chat. One I have second. already put it, Tejas. You can continue. Okay, okay, fine. Okay, yeah. Sir, I have a question. Yes, please. For example, if I have two business, I am a makeup artist and I have a cake business also. I mean, search Google my business basically. So will I be able to do it on the same address, or I need to have two different address for the business? Okay. Your business will have different names, correct? Yes, sir. Okay. So I think there won't be any problem to do this because your business will have two address, and if at all Google raises any issue, duplication address issue, then what you need to do is you need to claim that business. Okay, you need to get access to that business. If you do that, then I don't think there will be any problem. Okay, sir. You just need to Because there are two different businesses. different email IDs only. Yes. There is another important thing. Thank you, Sahil, for pointing that out. You need to have a Gmail account for creating my business page. Okay. It is not possible to do that from any account. You need to have Gmail. Akhil correctly pointed out. If you create two different Gmail accounts and create your business from two Okay, different. sir. Thank you so much. Okay. Yeah, thank you. Yeah, so we will get into best practices now, because there are some things which you need to keep in mind while using Google Business. So we'll just see what are the best practices. Yeah, so this is the verification code I talked about. So you will get a postcard like this. इसमें वहाँ पे ऐसा verification code होगा, और वो verification code आप डालेंगे तो आपका business verify होता है. मैंने reasons बताया है कि Google does not want any fake profiles, correct? So that is why this verification is needed. Now, why this verification is needed? Because after this verification, many important features like reviews, product catalog, and insights are unlocked. Until then, they are locked. You are not able to utilize these facilities. But after verification, you can utilize these facilities. So, what exactly is product catalog? So basically, किसी भी बिजनेस का जैसे कैटलॉग होता है क्या, किसी भी रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड होता है कि वहां पे क्या ऑफर किया जाता है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या सर्विसेज है, उसका एक अंडर वन अम्ब्रेला यू क्रिएट अ कैटलॉग. सो गूगल माय बिजनेस पर भी आप ऐसा एक कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. सो देखिए, आपके एक बिजनेस है जिसके लेदर प्रोडक्ट्स है, तो उनके लेदर पर्सेस है, लेदर जैकेट्स है, वॉलेट्स है, उनके कुछ सिल्क के शॉल्स भी है, कुशन कवर्स, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके उस बिजनेस के. सो उसमें आप ये प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी तैयार कर सकते हैं, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं कि लेदर पर्सेस है आपकी, तो लेदर पर्सेस से डिफरेंट डिजाइन है आपके, तो ईच डिजाइन के लिए आप एक डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसके प्राइसेस आप डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, उसके कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो डाल सकते हैं. और अभी किसने पूछा था कि लैंडिंग पेज होगा तो कैसे कर सकते, तो यहाँ पे आप लैंडिंग पेज डाल सकते हैं. तो कोई आपका प्रोडक्ट देखेगा, वहां पे क्लिक करेगा, अगर आपने लैंडिंग पेज डाला है, लिंक डाली है, अमेजॉन की लिंक है शायद, तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इट विल डायरेक्टली टेक यू टू योर लैंडिंग पेज, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, व्हाटएवर इट इज. सो यू कैन डू दैट. Thank you. And then, yeah, sorry.
Yeah, thank you, sir. Thanks for introducing. Okay, yeah, thank you, sir. Yeah. So अगर आपकी सर्विसेज है तो भी आप सर्विसेज भी डाल सकते हैं, आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं, सर्विसेज भी डाल सकते हैं। आगे देखिए, ये इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यू नीड टू केयरफुली फिल आउट दैट इंफॉर्मेशन। अभी दयासरा का ये गूगल में बिजनेस पेज है, तो यहाँ पे हमने एड्रेस डाला है, यहाँ पे सर्विस एरियाज हमने डाले। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो शायद आपकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया होगी, पर अगर आपको कोई शॉप है तो फिर आपके सर्विस एरियाज क्या क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका शॉप है पर आप डिलीवरी भी करते हैं, पर डिलीवरी कहाँ कहाँ करते हैं आप। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप पुणे में है तो पुणे में कहाँ पे आप डिलीवरी करते हैं, या फिर पुणे के बाहर अगर आप डिलीवरी करते हैं तो कहाँ पे करते हैं। तो ये सर्विस एरियाज आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सर्विस एरियाज में आप सिटीज डाल सकते हैं, स्टेट्स डाल सकते हैं, आपके टाइमिंग्स क्या है ऑफिस के वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपका फोन नंबर आप डाल सकते हैं, आपकी वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं। Okay, so there are few things you need to keep in mind. गूगल में बिजनेस पर भी आप जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप फोटोज डालते हैं, वैसे गूगल में बिजनेस पर भी आप फोटोज डाल सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोज आप डाल सकते हैं। देखिए, अभी ये कोविड-19 के बाद उन्होंने नया शुरू किया कि कोविड-19 अपडेट। अगर कोई चेंज आपके बिजनेस में आया है कोविड-19 की वजह से कि मास्क आपके दुकान में कंपलसरी है या फिर सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का कंपलसरी है, तो आप ये कोविड-19 अपडेट डाल सकते हैं। या फिर अगर आपका रेस्टोरेंट 100% कैपेसिटी के साथ अभी आपका रेस्टोरेंट शुरू है तो ये अपडेट है, नया अपडेट है, लोगों को पता चलना चाहिए, तो ऐसी पोस्ट आप डाल सकते हैं। कोई ऑफर है, अगर आपकी ये दिवाली सेल चल रहा है अभी, या फिर अभी रमजान का महीना तो रमजान का कुछ सेल चल रहा है, कुछ भी हो, तो अभी उसकी कोई ऑफर है तो वो ऑफर आप ऐसे डाल सकते हैं। कोई नया अपडेट है, आपका दुकान, आपकी एक नई ब्रांच शुरू होने वाली है या फिर नए प्रोडक्ट्स आप शुरू करने वाले हो तो वो आप डाल सकते हैं। आपको कोई इवेंट है आपके दुकान में या कहीं भी, तो इवेंट का एक अलग पोस्ट आप तैयार कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट का पोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और ये पोस्ट तैयार करते वक्त कुछ चीजें वो ध्यान में रखनी है कि ये जो पोस्ट है, ये जो इमेजेस आप डिजाइन करोगे तो उसकी साइज यही होनी चाहिए 1200 बाय 900 पिक्सल्स, 1200 into 900 pixels. Now what is the reason behind this? If you create images of this size, then your images will look correct, the images will look nice. Because if the images are more than this size, then there is a chance that your image will not fit into the frame and it will get cropped automatically. So if there is any image content, कुछ लिखा है अगर image पे, और अगर वो image बड़ी है, the image is bigger than the prescribed size, then it will not fit into the frame and the letters will get cut. So अभी यहाँ पे देखिए, compare different loan schemes. अगर ये image correct size की इसलिए अच्छी दिख रही है, अगर ये होती तो चांसेस ऐसे होते कि कुछ लेटर्स अपने आप क्रॉप हो जाते, तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए you need to keep in mind that your image has to be of this size 1200 into 900 pixels. और ये इमेज क्रिएट करने के लिए there are few free websites like canva.com, यहाँ पे है canva.com, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसी साइज की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे आप डिफरेंट डिजाइन्स आपके इमेज के तैयार कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड चेक इट आउट। यहाँ पे एक बटन भी आप डाल सकते हैं। यू कैन ऐड कॉल टू एक्शन लाइक कॉल नाउ, साइन अप, ऐसे बटन आप डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे है लर्न मोर, तो अभी मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया तो ये मुझे किसी वेबसाइट पे लेके जाएगा, दयासरा की वेबसाइट पे, जहाँ पे एवरीथिंग इज इन डिटेल about this scheme, so everything is in detail on that website. और अगर call now है, if I click on call now, then it will directly call. Sign up है, अगर आपको कोई प्रोग्राम है इसके लिए आपको sign up चाहिए, if you click on sign up, then it will take you to that form where you have to fill up the information.
So you can add these different buttons. तो आपकी पोस्ट कैसी है क्या उस हिसाब से आप ऐसे बटन्स डाल सकते हो। ये बात आपको एक नोटिस करनी है, ध्यान में रखनी है कि आपके कैप्शंस अच्छे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए कैप्शंस। अभी देखिए यहाँ पे ये जो पोस्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है, पूरी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं लिखी है। लर्न मोर पे जाने के बाद अब मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर मैंने पोस्ट में ही पूरी इंफॉर्मेशन डाली नहीं है, क्योंकि अभी छोटा सा है, तो पढ़ के मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं लर्न मोर पे जाऊंगा। अगर दिखाई मुझे कुछ बड़ा पोस्ट है तो आई मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो कीप इन माइंड दैट योर कैप्शंस आर स्मॉल, दे आर कैची एंड यू यूज डिफरेंट कीवर्ड्स। ये देखिए, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट। सो ये एक प्रोग्राम, इसकी ये पोस्ट है, फ्री 30 डेज पीपीसी अकाउंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो उसकी ये ऑफर है, तो इसकी डिटेल्स डाले हैं हमने। आप प्रोग्राम आपका कब शुरू होने वाला है, कब खत्म होने वाला है, ऑटोमेटिकली सेट होता है फिर। तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स है ये। ओके, अपार्ट फ्रॉम पोस्ट, सो पोस्ट ऐसी होती है जैसे फेसबुक पर हम डालते हैं ना कि कुछ अपडेट है तो हम वो डालते हैं, वैसी पोस्ट होती है। पर उसके बावजूद आप कई फोटोज भी डाल सकते हैं, जैसे कि लोगो। ये डिफरेंट ब्रिक्स आपको दिखेगी कैसे डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। वी विल गो थ्रू अ रियल गूगल माय बिजनेस पेज, वहां पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो कवर इमेज, इट्स नथिंग बट द कवर इमेज यू हैव इन फेसबुक। ओके, सो फेसबुक पर एक कवर इमेज होती है, वैसी एक कवर इमेज है। और यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, सो आई डोंट नीड टू एम्फसाइज मोर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोगो। लोगो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्या मायने हैं, तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। सो यू नीड टू हैव अ लोगो एज वेल। और ये लोगो और कवर इमेज आप डाल सकते हैं, उसके बावजूद आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोज भी डाल सकते हैं। फोटोज और पोस्ट में डिफरेंस ये होता है कि फोटोज में कोई कैप्शन नहीं आप डाल सकते, या फिर जो बटन्स है वो बटन्स नहीं आप डाल सकते। पोस्ट पे आप वो बटन्स डाल सकते हैं, फोटोज पे नहीं डाल सकते। तो इनके भी कुछ keep in mind, create images, create your logo, create your cover pic of these exact sizes. तो अगर आपका लोगो है तो 800 into 800 पिक्सल का होना चाहिए, और हेडर है तो वो 1080 by 608 पिक्सल का होना चाहिए। तो इसी साइज का है, then it will look very good, or it may not fit into the frame. अब आप फोटोज क्या डाल सकते हैं, कौन कौन से फोटोज डाल सकते हैं? Then you can add photos of the interior of your business or the exterior of your business. अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उनके आप फोटोज डाल सकते हैं। अगर मेरा तेजस केक शॉप है तो मेरे केक के फोटोज में डाल सकता हूँ, या फिर मेरी जो टीम है, मेरे टीम के साथ मैं फोटोज डाल सकता हूँ। इट्स कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस टू पुट पिक्चर्स ऑफ योर टीम। तो आपका जो स्टाफ है, आपकी टीम है, आपके साथ जो काम करते लोग, उनके फोटोज आप इसमें डाल सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन? इस नहीं है तो हम अभी वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं उस पे जाएंगे। सही है सर, परफेक्ट है एकदम सही है। ओके ओके, सो नाउ ये वेबसाइट क्या होती है, गूगल माय बिजनेस की वेबसाइट। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन अ वेरी डायनामिक वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत खर्चा होता है। डायनामिक वेबसाइट होती है तो उसके लिए खर्चा बहुत होता है, एंड अ स्मॉल बिजनेस ओनर डज नॉट नीड सच अ डायनामिक वेबसाइट, टू बी ऑनेस्ट, एट द बिगिनिंग। ओके, once his business grows, her or his business grows, then they can create that website, but initially they can go with Google My Business website. Now this website does not have .com or .in kind of domain, business.site ऐसा उसका domain होता है। और business आपकी वेबसाइट क्रिएट करते समय try to use maximum keywords. Now keywords क्या होते हैं, तो these are nothing but the words by which people will look for your business. अगर मेरा केक शॉप है और ऐसा समझ लीजिए कि मुझे केक खरीदना है, तो मैं क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल करूंगा? मैं केक ऐसा सर्च करूंगा, या फिर केक शॉप ऐसा सर्च करूंगा, या फिर किसी केक का नाम सर्च करूंगा, या फ्रूट केक, पाइनएप्पल केक, ऐसा कुछ सर्च करूंगा। तो मेक श्योर यू यूज सच कीवर्ड्स। और आपके बिजनेस के क्या कीवर्ड्स है आप ये अच्छी तरीके से जान सकते हैं।
So think from the point of view of a layman who is looking for your service. Then what kind of words we will use on Google to look for your service, to look for your business. So keep that in mind, and then you can create a website. Okay, so these are insights. Insights kya hote hain? This is a very, very important tool once you create your business profile. Once your business is verified, insights is something which can show you how to move forward. आगे जाके कैसे काम करना है, ये insights आपको अच्छी तरीके से बता सकता है. Insights क्या है? It's nothing but different kinds of data. आपको ये different kind of information provide करता है. देखिए मैं अपग्रोथ से हूँ. अपग्रोथ is a growth consultancy firm. Okay, हम growth consultancy में काम करते हैं. तो Google मुझे बताएगा कि what words people have used to search for my business or to search for the service which I provide or which my company provides. So there are total 2,505 searches. 2,505 total searches है और उनमें से 245 searches है या upgrowth इसी नाम से है. Okay, 188 searches है growth marketing, 179 है digital marketing. So these are keywords. Okay, ये keywords है. और आप आपकी जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे, आपके जो आगे के पोस्ट है वो क्रिएट करेंगे, वहां पे आप ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय लुकिंग एट योर इनसाइट्स, बिकॉज़ बाय दैट यू विल गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स पीपल आर यूजिंग. अब जैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रोथ एजेंसी है, सो एंड हम पुणे में बेस्ड है, तो लोगों ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पुणे. जैसे अगर आपका कोथरूड में केक शॉप है तो पीपल विल सर्च फॉर केक शॉप इन कोथरूड. करेक्ट. अगर आपका कोई केटरिंग का बिजनेस है, then people will search for catering business in Pune. So these are the keywords you need to keep in mind, and you need to keep using those keywords. और insight से आपको पता चलेगा कौन से keywords लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. बाकी इंफॉर्मेशन भी होती है कि जैसे कि अगर आप टॉप में देख सकते हैं तो कितने लोगों ने सर्च किया है और कितने लोगों ने मैप पे सर्च किया है. लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखेंगे तो बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट को विजिट किया है, कि उन्होंने आपका नाम सर्च किया और फिर आपकी इंफॉर्मेशन देखी और आपको वेबसाइट पे वो गए. कौन सी भी वेबसाइट हो, गूगल की वेबसाइट हो या फिर आपकी कोई अलग वेबसाइट हो. सो हाउ मेनी पीपल डायरेक्ट वेंट टू योर वेबसाइट, हाउ मेनी पीपल रिक्वेस्टेड डायरेक्शंस, कितने लोगों ने कहाँ पे आपका बिजनेस, लोकेशन क्या है ये देखा, कितने लोगों ने डायरेक्टली आपका नाम सर्च करने के बाद आपको कॉल किया, ये डिटेल्स भी आपको मिलते हैं. तो आपको पता चलेगा कि आपको फोकस किस पे करना है और किस लोकेलिटी से आपको सबसे ज्यादा सर्चेस मिले, किन लोगों ने, किस लोकेलिटी के लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया है. तो देखिए ये पिन कोड्स है, तो इन पिन कोड्स का इस्तेमाल करके इनको ध्यान में रख आप किस रीजन पे आपको फोकस करना है ये डिसाइड कर सकते हैं. ओके सर जी, एक बात पूछना था. या श्योर सर, ये जितने भी सर्च करते हैं उनका हम लोग डाटा देख सकते हैं क्या, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या भी? एक्चुअली नो, आप उनका डायरेक्टली ऐसा डाटा आपको नहीं मिल सकता है. आपको टोटल नंबर्स मिल सकते हैं कि कितने लोगों ने ये किया है. इंडिविजुअल डेटा आपको नहीं मिल सकता सर. पर ये जो नंबर्स भी है, these numbers are also very effectful because इन नंबर से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना है. और अगर आपको कोई कॉल वगैरह करता है तो उनके डिटेल्स आप हमेशा आपके पास रख सकते हो, पर ऐसे इंडिविजुअल डिटेल्स नहीं मिलते. थैंक यू. किसी को और कोई सवाल है? अगर सवाल है तो आई विल आंसर दोस और वी विल गो टू एक्चुअल गूगल माय बिजनेस पेज एंड सी हाउ द पेज लुक्स. ये कीवर्ड्स कहाँ इनपुट करना है हम लोग को? ओके, सो आप जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे, मैं बताऊंगा आपको वेबसाइट कहाँ पे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं. तो वेबसाइट पे आप ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो पोस्ट करेंगे ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट यू विल डू, वहां पे आप ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. और या फिर आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं बताता हूँ आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन कहाँ पे डालते हैं. वो लिस्टिंग में, लिस्टिंग के बारे में. यस, करेक्ट. I hope I have answered your question.
या आई मीन मेरा वेबसाइट है नहीं अभी तक, तो वेबसाइट के Okay. बगैर की और जगह है जहाँ हम लोग कीवर्ड्स डाल सकते हैं? हाँ, आप जब पोस्ट करेंगे ना तो वहां पे उन पोस्ट पे आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। और अभी आपकी जो आप गूगल माय बिजनेस वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं अभी। मतलब आप दूसरी वेबसाइट करना चाहते हैं तो ठीक है, पर तब तक यू कैन क्रिएट गूगल माय बिजनेस वेबसाइट एंड यू कैन यूज कीवर्ड्स ऑन दैट वेबसाइट टिल देन। Okay. Sir, I have a question. Yeah, please ask. So, like, there are people handling people's Instagram profile and Facebook profile. So, in a way, Correct. can we handle people's Google My Business account as well? Definitely. So, this can be added value. We do that. We actually do that. I see. So, sir, like starting me, what would be the charges like for a freelancer or for a startup digital marketing? Okay, so I'm not sure I can answer these questions. I mean, these are technical things, monetary things. I'm not sure I can answer that question. But you can start. Firstly, you can create your profile, and then you can look for someone else to. They just to help you out on this, basically you can contact the Asra Foundation for that, and Alright. Our team will support you on. Okay, thank you so much. Yeah. Any other question? Hello. Yes, sir. मला एक विचारायचं होतं, मराठी इज ओके ना? बोला सर, मी मराठीच आहे, बोला. हा, मागे तुम्ही म्हणाल की लोकेशन तुम्हाला द्यायचं का नाही ते विचारतो, बरोबर? एकदम सुरुवातीची गोष्ट सांगतोय मी. आणि जर मला लोकेशन माझं आता द्यायचं नसेल, माझे समजा एक प्रॉडक्ट आहे ते मी रिटेल शॉपला मी विकत असेल, ओके, आय डोंट वॉन्ट कस्टमर टू विजिट माय प्लेस, मीन्स माय मॅन्युफॅक्चरिंग प्लेस, ओके, तर लोकेशन द्यायला काही कंपल्सरी नसतं ना आपल्याला? नाही, तुम्ही नाही म्हणू शकता ना. दोन ऑप्शन असतात, येस किंवा नो. येस किंवा नो, करेक्ट. तुम्ही नो वरती क्लिक करा. आता एखाद्याचा ऑनलाईन बिझनेस असतो, त्यांचं कुठे ऑफिस नसतं, कुठे शॉप नसतं, करेक्ट, बरोबर? हो. सो तुम्ही तिथे नो क्लिक करा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. आणि अजून एक होतं, जर आपलं लँडिंग पेज पण असेल आणि आपण होम डिलिव्हरी पण देत असू समजा, तर मग त्या केसमध्ये तिथे काय दोन्हीला हे करावं लागेल? तुम्ही तसे डिस्क्रिप्शन मध्ये तसे डिटेल्स तुम्ही टाकू शकता ना सर. ओके. किंवा तुमची जी पोस्ट असेल, आता पोस्ट मध्ये मी जसं तुम्हाला म्हणालो की तुम्ही ते बटन टाकू शकता. सो तुम्ही तुमच्या प्रोफाईल मध्ये होम डिलिव्हरी असं लिहू शकता, किंवा आता सर्व्हिस आहे, सर्व्हिस ऑल ओव्हर इंडिया तुम्ही करत असाल, देत असाल, किंवा तुमची होम डिलिव्हरी समजा फक्त पुण्यामध्ये आहे की महाराष्ट्रात आहे का कुठे आहे, तसं तुम्ही सर्व्हिस एरियामध्ये तसं टाकू शकता. आणि तुमच्या पोस्ट मध्ये तुम्ही ते बटन टाकू शकता की डिरेक्टली तुमच्या लँडिंग पेज वरती घेऊन जातील तुम्हाला. ओके, थँक्यू. ओके. याच्यामध्ये सर एक फक्त ऍड करतो, ऍड्रेस टाकताना तुम्हाला गरज नाहीये तुमचा ऍड्रेस टाकलाच पाहिजे असं काही नाही. फक्त जेव्हा बिझनेस तुम्ही व्हेरीफाय करताना, ओके, सो आय विल तुम्ही मराठीत प्रश्न विचारला, बट आय विल आन्सर दिस इन युअर इंग्लिश सो अदर्स विल ऑल्सो अंडरस्टँड, बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इवन इफ यू डोंट पुट युअर ऍड्रेस इनिशियली बिकॉज यू डोंट हॅव एनी लोकेशन and you do not want customers to come to your shop, so it's okay if you do not add address. But while verification, if Google asks you to verify it by post, then there you have to put some address. Okay, it could be your office address. I mean, you don't want customers to come to your office, but if you have an office, you can put your office address, or you can put your home address. That address is not reflected on your page. Okay, so the address you put while verification is not reflected on your page. So starting में आप लिख सकते हैं कि मेरा कोई एड्रेस नहीं है, I do not have any address, but during verification you have to put some address because that is very necessary. You have to put some address, but remember that address is not reflected on your Google My Business page. So it is a very important thing. Please note that. Yes, understood. Thank you. Okay. Yes, thank you, sir. किसी को और कोई सवाल है, या फिर हम डायरेक्टली अभी देखेंगे कि गूगल में बिजनेस पेज दिखता कैसे है एक्चुअल में? हाँ, बोला ना सर. हेलो, should we move ahead, Anand? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, absolutely. Yes. Okay. So now I will
show you how the page actually looks, Google My Business page looks. So this is one of our clients. I will show his page. So this is an Ayurvedic clinic. This is our client, and he is in Telangana right now, and he has an Ayurvedic clinic in Telangana. Okay, so this is the home page. ये ऐसा home page दिखता है. Home page पे आप post create कर सकते हैं, add photo इसमें डाल सकते हैं, या फिर एक ad भी आप create कर सकते हैं. और ये नीचे से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. इनसाइट्स का ऑप्शन होता है, रिव्यूज का ऑप्शन होता है. एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ पे पोस्ट है. पोस्ट कैसे डालते हैं आप? तो ये देखिए, उन्होंने जो ऑलरेडी पोस्ट डाले हैं, ये पोस्ट ऐसे दिखते हैं. या फिर ये ब्लू बटन आपको दिखेगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है इस बटन पे, एंड देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट व्हिच यू कैन क्रिएट. ऑफर है, व्हाट्स न्यू, इवेंट है. तो अगर आप इवेंट पे गए तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स डाल सकते हैं. इवेंट का टाइटल क्या है, इवेंट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, और डिटेल्स में इवेंट के डिटेल्स डाल सकते हैं. बटन आप डाल सकते हैं कि इवेंट है तो आपको बुकिंग करना है, तो बुक का बटन आप डाल सकते हैं. और जो फॉर्म है, वो फॉर्म की लिंक आप उसमें डाल सकते हैं. या फिर ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, साइन अप, लर्न मोर, कुछ भी हो, ये ऐसे बटन आप सभी जगह पे डाल सकते हैं. ऑफर पे, व्हाट्स न्यू पे, सभी जगह पे ऐसे आप बटन डाल सकते हैं और ऐसी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे. कीप इन माइंड द साइज ऑफ द पोस्ट. देन इंफॉर्मेशन में आप गए तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. कीप इन माइंड टू राइट प्रॉपर एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज यही इंफॉर्मेशन देख के कस्टमर विल अप्रोच यू. दिस इंफॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच कस्टमर विल लुक फॉर इनिशियली. जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, या फिर आपके सर्विस एरियाज कहाँ पे है, आप आपके ऑफिस के, शॉप के टाइमिंग्स क्या है. ये डॉक्टर, इनका क्लिनिक है, सुबह 10 बजे शुरू होता है, दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है. ये संडे को है, बाकी दिन 10 बजे शुरू होता है, 9 बजे रात को बंद होता है. तो ये सारी डिटेल्स, टाइमिंग्स वगैरह आपको डालनी है. कुछ एक्स्ट्रा आवर्स है, स्पेशल आवर्स आप कुछ डाल रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं. फोन नंबर डाल सकते हैं, आपके सर्विसेज क्या है. ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन है आपके बिजनेस का. किसने पूछा था कि कीवर्ड्स कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं. यू कैन यूज दोस कीवर्ड्स इन दिस स्मॉल डिस्क्रिप्शन. और वेबसाइट पर भी लैंडिंग पेज डालेंगे, जैसा मैं पूछ रहा था. लैंडिंग पेज, करेक्ट. तो ये डिटेल्स आप वहां पे डाल सकते हैं. देन ये इनसाइट्स है. तो ये यहाँ पे इनसाइट्स पे अभी इंफॉर्मेशन में एक महीने की इंफॉर्मेशन मिलती है, एक वीक की इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक क्वार्टर की इंफॉर्मेशन मिलती है. इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. तो यहाँ पे इनके टोटल सर्चेस है 506 है. तो डायरेक्ट सर्चेस है कितने हैं, और सर्चेस में भी कितने लोगों ने सर्च किया, कितने लोगों ने मैप पे देखा, ये डिटेल्स है. अब इस क्लाइंट को हमारे कितने लोगों ने वेबसाइट उनकी विजिट की, किन लोगों ने डायरेक्शंस पूछे, कॉल किन लोगों ने किया, कहाँ से, ये जो अभी ये तेलंगाना के पिन कोड है, तो कहाँ से सबसे ज्यादा सर्चेस आए हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है. So it's a very useful information. Keep a check on your insights, because that is something which gives you more idea about how to proceed further. तो अभी ये रिव्यूज है. तो रिव्यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ. तो रिव्यूज का फॉर्म आप अपने कस्टमर्स को, या फिर आपके जो फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके क्लाइंट्स है, उन्हें आप ये फॉर्म भेज सकते हैं. कहाँ से भेजना है मैं बताता हूँ. ये रिव्यूज है, यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं रिव्यूज को. आप देखिए, यहाँ पे किसी ने उनको एक रिव्यू दिया था, तो वो जो डॉक्टर है उन्होंने उनको रिप्लाई दिया यहाँ से. तो ये रिप्लाई रिव्यूज का आप यहाँ से दे सकते हैं. और रिव्यू का जो फॉर्म होता है, होम पेज पे जाने के बाद ये देखिए, ये फॉर्म आपको दिखेगा, गेट मोर रिव्यूज. तो यहाँ पे शेयर रिव्यू फॉर्म ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये जो लिंक होती है, इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से भेज सकते हैं लोगों को. आपके जो कस्टमर्स है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको आप ये रिव्यू का जो फॉर्म है, ये फॉर्म भेज सकते हैं. आप मैसेजेस से, अगर किसी ने आपको कुछ मैसेज भेजा है तो आप डायरेक्टली मैसेजेस से रिप्लाई कर सकते हैं.
ये फोटोज हैं, यहाँ पे फोटोज आप डाल सकते हैं। देखिए इन्होंने उनके इंटीरियर के फोटोज डाले और देखिए ये कवर इमेज है, यहाँ पे ये लोगो है, उनका लोगो दिखेगा, उनकी कवर इमेज दिखेगी और ये उनके कुछ इंटीरियर के फोटोज है, ये फोटोज उन्होंने यहाँ पे डाले हैं। इनका प्रोडक्ट कोई नहीं है ये, पर यहाँ पे आप प्रोडक्ट यहाँ से डाल सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपके प्रोडक्ट का, फोटो डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी है और कोई सेकेंडरी कैटेगरी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। कितनी प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस, प्रोडक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या कुछ। और जो बार बार पूछ रहे हैं कि लैंडिंग पेज, तो यहाँ पे आप लैंडिंग डाल सकते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन ऐसा सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट पे अगर कोई गया एंड देन डायरेक्टली इफ दे क्लिक ऑन दिस लिंक दे विल गो टू दैट लैंडिंग पेज। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। सर्विसेज अगर है, देखिए तो इनकी सर्विसेज है, इन्होंने सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन डाली है, तो क्या की सर्विस है, कहाँ कितने प्राइस से स्टार्ट होती है, क्या उसके डिटेल्स है वो उन्होंने डाले हैं। और ये वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पे आप डिफरेंट थीम्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, जो थीम आपको अच्छी लगेगी। जैसा मैंने कहा इट्स अ वेरी बेसिक वेबसाइट, सो आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते या फिर देयर इज नो मच रूम टू एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट, बट यस इट इज इनफ फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स, ये थीम्स आप डाल सकते हैं। एडिट पे जाके यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उनका कुछ कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स डालेंगे, तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। देखिए अभी ये क्लासिकल एंड ऑथेंटिक आयुर्वेदिक एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर लोकेटेड एट मीरपेट हैदराबाद। तो अभी कोई हैदराबाद में या मीरपेट ये जो शहर है यहाँ पे अगर कोई होगा और उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए तो वो सर्च क्या करेगा, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर और पंचकर्मा ट्रीटमेंट, करेक्ट। तो ये कीवर्ड्स है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, क्लासिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो ये कीवर्ड्स है। तो उन्होंने ये कीवर्ड्स अपने वेबसाइट में डाले यहाँ पे, तो ऐसे आप कीवर्ड्स अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं। और फोटोज है, आप यहाँ से फोटोज अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा व्यू वेबसाइट पे, तो अभी यहाँ की वेबसाइट, उनकी वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएटेड है, दैट्स व्हाई इट सेज व्यू वेबसाइट। If your website is not created, then you will see publish website option. It will be publish website, and once you say publish website, then your website will be live, and then you can make changes. So अगर आपको वेबसाइट में कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नया कुछ इमेज डालनी है तो वेबसाइट पे कुछ ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे, दैट इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड ऑन दी वेबसाइट। तो मैं व्यू वेबसाइट पे जाता हूँ, आपको बताता हूँ ये वेबसाइट कैसी दिखती है। देखिए ये उनकी वेबसाइट है, गेट डायरेक्शंस है यहाँ पे, ये उनका कवर फोटो है, ये कुछ अपडेट्स है। सो जो अपडेट्स, जो इमेजेस या फिर पोस्ट आप डालेंगे तो वो डायरेक्टली इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस वेबसाइट। ये रिव्यूज है, तो रिव्यू भी ऐसे अपने आप आ जाते हैं, नए रिव्यूज जो होते हैं, दोज रिव्यूज आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड। देन अगर कोई वेबसाइट पे गया तो यहाँ से भी वो रिव्यू लिख सकता है, राइट, रिव्यू पे जाके आपको रिव्यू दे सकता है। तो ये कुछ जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उनके डिटेल्स है, उनके ये फोटोज है और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उनके। तो देखिए यहाँ पे उनका बिजनेस है, ये मैप पे ये बिजनेस यहाँ पे शो हो रहा है, ये उनका एड्रेस है और ये उनके बिजनेस आवर्स है, वर्किंग आवर्स है ये उनके। तो इस तरीके से आप ये आपकी बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल वेबसाइट। यूजर्स क्या है, तो जैसा किसने पूछा था कि अगर आपके कोई आपका दूसरा कोई आपका प्रोफाइल हैंडल कर सकता है क्या, तो डेफिनेटली दूसरा आपका प्रोफाइल हैंडल कर सकता है। जिस ईमेल आईडी से वो अकाउंट, ये प्रोफाइल क्रिएट किया गया है, दैट विल बी योर प्राइमरी ओनर। तो यहाँ पे अगर ये जो डॉक्टर सर है ये प्राइमरी ओनर है और मैं मैनेजर हूँ उनका, तो यहाँ पे आप नए यूजर्स भी डाल सकते हैं। अगर किसी दूसरे को आपको ओनर बनाना है, किसी दूसरे को आपको मैनेजर बनाना है, तो वो भी आप ये कर सकते हैं। सो या दिस इज द जनरल आइडिया, क्या होता है गूगल मैप बिजनेस, हाउ इट इज क्रिएटेड एंड व्हाट कैन यू डू। तो अभी हम एक
जल्दी से एक सर्च कर लेते हैं, आपको पता चलेगा अभी ये गूगल में बिजनेस है, ये ऐसे दिखता है, या आपको दिखेगा ऐसा आपका पेज, और किसी कस्टमर को कैसे दिखेगा। तो मैं एक सर्च करता हूँ यहाँ पे कि केक शॉप इन करवे नगर, ऐसा मैं अभी सर्च करता हूँ। मोर प्लेसेस में अगर मैं गया तो देखिए ये रिबन्स एंड बलून्स, केक एंड क्रीम करवे नगर, तो ये जो सारे आपको अकाउंट्स दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट गूगल माय बिजनेस। अगर आप जब आपका प्रोफाइल पेज आप क्रिएट करोगे, आपका अकाउंट भी ऐसे ही सर्च करने के बाद दिखेगा। तो हम एक देख लेते हैं, ये देखिए रिबन्स एंड बलून्स, ये तो यहाँ पे ये 83 गूगल रिव्यूज है उनको, ये स्टार्स भी वहीं से मिलते हैं। 83 गूगल रिव्यूज है उनके। सर्विस ऑप्शंस क्या है उनके, तो टेक अवे ऑप्शन है उनका, ये एड्रेस क्या है, ये उनका एड्रेस है। उनके शॉप के टाइमिंग्स क्या है, तो अभी ये शॉप ओपन है तो ये ओपन दिखाएगा। फोन नंबर है, उनके ऑर्डर, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट डाली है, तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। अगर तो ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ पर उनके डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हैं, पर अगर आपका कुछ लैंडिंग पेज है तो आप यहाँ पे लैंडिंग पेज का एड्रेस डाल सकते हैं। देन ये फोटोज उन्होंने यहाँ पे डाली है, ये रिव्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगे। या तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, ऐसा कस्टमर को आपका पेज ऐसे दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, इन्होंने आंसर भी किए कुछ क्वेश्चंस के कि तो यहाँ अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चंस करता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली उनको, जो मैसेज का ऑप्शन था ना, तो यहाँ से आप उनको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे दिखता है आपके कस्टमर को, आपका पेज ऐसे दिखेगा। और ये पहले जो मैंने बोला था, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये आपको आपका पेज ऐसे दिखता है। या सो दिस इज प्रीटी मच इट। अगर किसी को कुछ सवाल है तो यू कैन प्लीज क्वेश्चन। Sir, how many posts has to be uploaded on this Google My Business website to maintain the algorithm and all? Like rating wise, Yes. इतने सारे So लोग रहते हैं. Yes, please continue. Yeah, so basically there are so many people of the same brand, same business basically. So सबसे top Google My Business में आना है, तो what is the necessary things we need to consider? Okay, so for this you need to keep two things in mind. There is no benchmark for posting that you have to post 10 images every week, you have to post 100 images every month. There is no such benchmark. Yeah, but one thing you need to keep in mind that you have to be consistent. Okay, so even if you are posting 2 images every week, then you have to be consistent. You need to keep doing that every week. Do not take any break. Okay, so this week you posted 2 images, then next week you posted 4 images, then you did not post anything for next 2 weeks. Do not do that. Even if you are posting 2 images, 2 posts every week, that is sufficient. But keep doing that consistently, and it takes time. I mean, it's as I said, it is a free platform. On Facebook or Instagram, if you pay, then it reaches to maximum number of people, but that is paid. It's a free platform, so for that, for the results to show up, it takes some time, but you can hasten that process to get quicker results. Keep in mind that you have to be consistent, and second thing is you have to use maximum keywords. Okay. These are things you need to keep in mind. And your images, as I said, keep in mind the sizes of the image. If you do that, then that looks attractive. Your images look attractive. Try to use different platforms like canva.com, where you can edit your images, make them more attractive, create images of the particular size. So these are 3 things. Keep posting regularly. Secondly, keep maximum keywords. And third is keep your images attractive, captions and images attractive. Okay, sir. Thank you. Yeah. तेजस, बहुत ही इंसाइटफुल आपने इंफॉर्मेशन दी थी, एंड आई थिंक यू आल्सो आंसर्ड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच for that. We'll keep having these interactions. I'm sure many of you got your answers. Yeah, maybe we'll take one last question because we are at 5 o'clock mark.
food passionista. You can go ahead and ask. Yeah, there is any way we can embed our social media channels to the listing? Can you repeat? You were not properly audible. Can you please? Can you repeat your embed? question? Can you put together social media marketing channels in some way? Yeah. So instead of landing Can page, we you are asking, can redirect you them? put your? Yes. Okay. Yeah, you can do that. I mean, in your post, you can add the link to your social media channels. In your post, you can add a link to your Facebook account or your Instagram account. You can definitely do that. I don't think there is any way you can sync them together. Like you can do that on Instagram or Facebook, but you can definitely do that on your post. You can put a link, and then maybe you can check out our social media profile, or check out our more options, more products on our Instagram page. You can definitely add that. Sure. Okay. All right. Thank you, Tejas. Yes. It was great. And we will continue these discussions in some programs that are coming up. I would say that it was great participation from everybody present on Zoom. Lots of entrepreneurs I can see here, and also I'm sure some of them who are watching on Facebook. So Tejas, thank you so much. It was wonderful thank you so much. understanding about GMB, and looking forward for more interactions like this. Thank you all the entrepreneurs on the Zoom platform, as well as all of you on Facebook. Thanks a lot. Have a great evening ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.